Hello and welcome to India Sense, where I speak with global opinion makers. The United States has made a strategic decision over the last 20 years to move closer to India. So a $7 trillion economy seems a perfectly conceivable number. If you want to be a national party, it's that you sort of accept the way the world is rather than want to endlessly hark back to how it was. Modi is promoting the digitization of the economy, which is accelerating growth in the country. I now request the Honorable Prime Minister to launch NDTV World and address the summit. It was the grand launch of NDTV World by Prime Minister Narendra Modi. NDTV World, as he laid out his vision for the India century at the NDTV World Summit. ऐसी सदी जिसमें भारत के प्रयासों से दुनिया में स्थिरता आए. In the presence of those who are shaping our future. मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं. NDTV World, your new home for global news is here. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world and more. Download the NDTV app today and get access to the best journalism and storytelling on your smartphone or tablet. The NDTV app. News that matters to you. NDTV proudly upholds its legacy of trust and credibility. According to the prestigious Reuters Institute's Digital News Report 2024, NDTV is the top-most news platform in the country. Number one in both online and offline reach in India, beating all its competition. NDTV stands for trust. New day, new show, a new experience. Start your day with the news, not views. We bring you stories that matter and impact your life. News that informs and keeps you ahead. from Maximum City, Mumbai, to the seat of power, Delhi. NDTV brings you the best breakfast show. Breakfast news on NDTV, 8 a.m. every day. We reached an agreement on petroling. We have gone back to where the situation was in 2020, and we can say with that the disengagement process with China, you can say, has been completed. The understanding, to my knowledge, is that we will be able to do the petroling which we were doing in 2020. I've been reporting on all issues big and small from Andhra Pradesh, Telangana, rest of South India, bringing you all the action, all that you need to know, all that you want to know. The energy of Maximum City is infectious. Hello, Moto. Motorola Edge 50 Pro, world's first AI-powered pro-grade camera. Top 7 car launches of 2024. This year's top 7 bike launches. Kia Carnival reviewed. A very happy Diwali to all of you. This is the Diwali week, so we have got a very special episode planned on the NDTV Auto Show. 2024 has been a very exciting year in terms of launches, so we get you what we think are the top car and bike launches of this year. तो जैसा आपको मुग्धा ने बताया कि साल 2024 काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है और जब आ गया है दिवाली का समा तो मैं आपको बताते हुए काफ़ी खुश हूँ कि इस साल ऑटोमोटिव जगत में काफ़ी सारे धमाके हुए हैं और अब उनकी बात कर लेते हैं जो पटाखे हमें इस साल देखने को मिले।
So I'm gonna tell you about top 7 picks from this year's car launches, जहाँ पर काफ़ी सारे facelift थे and there were a lot of all new models. But उनमें से कौन से 7 हमें सबसे ज़्यादा खास लगे, उनकी बात शुरू करते हैं with the first and foremost of the list, the Maruti Suzuki Swift. सबसे पहले आती है हमारी सबकी फेवरेट मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इसको नए 4th जनरेशन अवतार में लॉन्च किया है मारुति ने इस साल और काफ़ी सारे नए फीचर्स के साथ आती है। प्राइसेस शुरू होते हैं 6.5 लाख रुपए से। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इस बार स्विफ्ट को एक 3-पॉट पेट्रोल मोटर मिलता है जो कि ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए ट्यून किया है ताकि आपको नई 4th जन स्विफ्ट में रियल वर्ल्ड माइलेज मिले लगभग 20 kmpl का। अगर बात करें अपनी सेकेंड गाड़ी की तो वो है Citroen Basalt। Citroen Basalt एक मिड साइज कॉम्पैक्ट SUV है जो कि टक्कर देती है Hyundai Creta और Kia Seltos को। यहाँ पर आपको एक कूपे SUV डिज़ाइन मिल जाता है, उसी के साथ एक अफोर्डेबल प्राइस टैग भी मिलता है बिकॉज कीमतें शुरू होती हैं 7,99,000 रुपये से। सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको एक आलीशान दिखने वाली गाड़ी चाहिए और कंफर्ट का अच्छा कॉम्बिनेशन भी चाहिए तो Citroen Basalt एक अच्छी पिक हो सकती है। नेक्स्ट अप इज़ द टाटा कर्व। ये तीसरी गाड़ी है हमारे लिस्ट पर और उसका कारण है इसके लुक्स। टाटा इज़ ट्राइंग टू गिव यू अ हैप्पी दिवाली विश विद द टाटा कर्व। ये हमने पहले भी बोला है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक और पेट्रोल, डीजल तीनों ही वेरिएंट्स मिल जाते हैं। अगर आइस मॉडल्स की बात करी जाए तो 10 लाख रुपए से कीमत शुरू होती है, वेराज इलेक्ट्रिक के लिए आपको 17.5 लाख रुपए देने होंगे। कर्व में भी आपको कूपे SUV डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलता है बट काफ़ी सारे नए फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। जैसे आपको लेवल 2 ADAS मिल जाता है, आपको एक 10.25 इंच का ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है और मिलती है एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ। तो फीचर्स के मामले में कर्व भरपूर मात्रा में लेस है। तो बात करते हैं चौथी गाड़ी इस लिस्ट पर कौन सी है। ये है महिंद्रा थार रॉक्स। यहाँ पर आपको एक 5 डोर SUV मिल जाती है, 5 डोर वर्जन मिल जाता है थार का। लोगों का कहना है ये डिज़ाइन कुछ जीप रैंगलर पर बेस्ड है। आई ऑल्सो अग्री ऑन दैट नोट। बट इंजन ऑप्शंस की बात करी जाए तो आपको एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल मिलता है, 2.2 लीटर का मिलता है टर्बो डीजल, आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स चॉइसेस मिल जाती हैं। उसी के साथ आपको मिलता है एक 4x4 ड्राइव ट्रेन। तो अगर आपको एक ऐसी SUV की तलाश थी जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बुच हो, चलाने में काफ़ी शानदार हो और उसे आप लेकर कच्चे पक्के टूटे और ऑफ रोडिंग वाले रास्तों पर या ट्रेल्स पर जा सकें तो रॉक्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें आपको एक पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है और इंटीरियर्स मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा आलीशान जो कि कंफर्टेबल हैं और बहुत प्रीमियम भी लगते हैं। अब नेक्स्ट गाड़ी की बात करी जाए, द 5th कंटेंडर ऑन आवर लिस्ट, दैट वुड बी द ऑल न्यू 5 सीरीज़। कीमतें शुरू होती हैं 72,90,000 रुपये से और इस बार BMW ने 5 सीरीज़ को थोड़ा कंफर्ट ओरिएंटेड बनाया है। जैसे कि हमेशा से पुरानी जनरेशन्स जो 5 सीरीज़ की रही हैं, दे हैव बीन मोर ड्राइवर ओरिएंटेड। फॉर एग्जांपल द F10 सीरीज़ और द क्रिस बैंगल्स फेमस E60, दे हैव बीन ट्यून्ड मोर फॉर ड्राइविंग डायनामिक्स। बट इस बार आपको 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं जिसकी वजह से आपको मिल जाता है एक अच्छा खासा एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि आपकी राइड रहती है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल। एक ही इंजन ऑप्शन इस बार आपको 5 सीरीज़ में मिलता है बट आई हैव टू से दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस ऑफ अफोर्डेबिलिटी, कंफर्ट एंड ड्राइविंग डायनामिक्स इन एग्जिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। और उसके बाद आती है Mercedes-Benz E-Class। न्यू जेन मॉडल E-Class का Mercedes ने अब ही लॉन्च किया है to go against the likes of the 5 Series and the Audi A6, the Volvo S90 and the Lexus ES। लेकिन Mercedes E-Class इन सारी ही गाड़ियों से थोड़ी महंगी है। आपको इंजन ऑप्शंस भी 3 मिलते हैं, E200 यानी कि एक 2 लीटर पेट्रोल, एक 2 लीटर डीजल और एक 3 लीटर स्ट्रेट 6 टर्बो पेट्रोल। तो काफ़ी अच्छे इंजन ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। एंड इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट फीचर्स, यू आर गेटिंग अ लोड्स ऑफ देम। पैनोरामिक सनरूफ, बड़े अलॉय व्हील्स, डिजिटल LED लाइटिंग और उसी के साथ आपको एक काफ़ी इनोवेटिव फीचर्स मिलता है, दैट इज़ अ पैसेंजर फेसिंग कैमरा। यानी कि आप इस गाड़ी में से अपने वीडियो कॉल्स ले सकते हैं या ऑफिस मीटिंग्स भी लेनी पड़े तो वो भी ट्रैफिक में चलते चलते किया जा सकता है।
अब 7वीं गाड़ी इस लिस्ट पर है इलेक्ट्रिक कार एंड इट इज़ द BYD सील। तो इस चाइनीज़ निर्माता की जो सील EV है ये हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और काफ़ी सारे लिहाज में पसंद आई। फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और अगर बात करी जाए कीमतों की तो यहाँ पर कीमतें शुरू होती हैं लगभग 41 लाख रुपए से और जाती हैं 53 लाख रुपए तक। रेंज की बात करी जाए तो आपको एक रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाती है ऑफ अराउंड 510 किलोमीटर्स, बट टॉप स्पेक मॉडल में मैन्युफैक्चरर 650 किलोमीटर्स की रेंज क्लेम करता है। बट हम अपनी 7वीं गाड़ी से जितने खुश हैं उतने ही हम खुश हैं 2 और एक्स्ट्रा गाड़ीज़ के साथ, जिसमें से एक है फोर्स गुरखा 5 डोर। अगर आपको जी वैगन हमेशा से पसंद थी तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगेगी। इनफैक्ट गुरखा कम्स विद अ मर्सिडीज डिराइव्ड इंजन एंड गियर बॉक्स, तो आपको काफ़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ मिल जाती हैं एंड द कार इज़ वेरी अपराइट एंड कम्स विद सीटिंग स्पेस फॉर 7 ऑक्यूपेंट्स। एंड द लास्ट कंटेंडर, और आई वुड से द वाइल्ड कार्ड एंट्री ऑन दिस लिस्ट इज़ द MG Windsor। इस गाड़ी को बेस मॉडल के साथ इंट्रोड्यूस किया है, यानी बैटरी एज अ सर्विस। तो स्टार्टिंग प्राइस रखा है 9.99 लाख, बट आप हर किलोमीटर के लिए लगभग 3.5 रुपये पे करते हैं एज अ रेंट फॉर बैटरी। और उसी के चलते MG Windsor आते ही काफ़ी धूम मचा रही है इंडियन मार्केट में अपनी सेल से। तो ये थी वो कुछ 7 खास गाड़ियाँ, या मैं कहूँ 7 पटाखे जो इस दिवाली NDTV ऑटो के कानों में शोर मचा कर गए हैं। बट साथ ही क्यों, क्योंकि इस साल के अंत पे हम बनाएंगे एक और वीडियो जहां पर बात करेंगे टॉप 10 कार लॉन्चेस ऑफ द ईयर की। फिलहाल मैं ये स्टेज देता हूं किंगशुक को, ताकि आपको टॉप 7 बाइक्स के बारे में भी बताया जा सके। The year till date has been really exciting for motorcycle enthusiasts, and there have been quite a few delectable launches across various segments. And on the occasion of Diwali, here's a quick recap of the top 7 motorcycle launches that hit the right notes with the motorcycling community. The Bajaj Freedom 125 is the first motorcycle to run on both petrol and CNG. It is a sincere and a brilliant effort from the company to offer a frugal, lightweight and a stylish motorcycle. The sub 1 lakh rupees price tag is the proverbial cherry on the cake. This year Bajaj had not one but 2 125cc motorcycle launches. The second one after the Freedom being the Pulsar N125. With a fresh, youthful design, decent set of features, frugal motor and good road presence, the recently launched Bajaj Pulsar N125 will be an automatic consideration for people looking for a product in the 125cc motorcycle segment. Classic Legends owned Java did well to give the Java Classic a thorough update with subtle design tweaks, a reworked engine and much needed refinement. Its period correct looks and character make it a good choice in the 350cc modern classic segment. Up next is the Triumph Speed T4. Yes, it is not an all-new product, but the idea behind it and more importantly, the execution is absolutely spot on. The Speed T4 offers an affordable and a relaxed riding experience, and yes, it has the goods to knock Royal Enfield off its perch. After the Triumph, we have the Hero Maverick 440, which is company's flagship product and has been derived from the Harley-Davidson X440. The Maverick is a modern roadster, has a smooth engine, decent features and an attractive price tag, making it a good alternative to 350-400cc motorcycles. Royal Enfield has been on somewhat of a motorcycle launching spree, and this year it launched the Guerrilla 450, the second model to have the Sherpa 450cc engine platform. The Guerrilla 2 is a cool looking roadster and has some serious performance to boot. A definite conversation starter, it easily makes it to a list of top motorcycle launches this year. And the last motorcycle on the list is the BSA Goldstar 650. Classic Legends not only revived the BSA brand in UK a couple of years ago, but launched the Goldstar 650, a 650cc single-cylindered classic motorcycle that takes on the well-established Royal Enfield Interceptor 650. The Goldie, as it is popularly called,
with its period correct looks, a fun and a punchy engine makes for a nice addition to your garage. So which was your favorite launch? Do let us know and reach out to us. Yes, there are 2 full months before 2024 comes to a close, and expect some high decibel launches and fireworks from the likes of Royal Enfield, KTM and even Hero MotoCorp in the coming days. तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे आदरणीय मोदी जी का। छत्रपति शिवाजी महाराज की। घोषणा आणि जनतेचे पैसे लुटणं. कट कमिशन आणि करप्शनला आमच्याकडे थारा नाही. त्यांचा परिवारवाद आमचा महाराष्ट्रवाद. महाराष्ट्रामध्ये 1,75,000 जागा रिक्त पण का भरत नाही? राज्याची जनतेच्या घमाच्या पैशाची तिजोरी लुटण्यासाठी हे सरकार आहे. पूर्वीच्या सरकारच्या काळामध्ये निधी देताना त्यांना असं वाटायचं की त्यांच्याच खिशातले पैसे चालले. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचं काम आपल्या सरकारने सुरू केलं. Hello and welcome to India Sense, where I speak with global opinion makers. The United States has made a strategic decision over the last 20 years to move closer to India. So a $7 trillion economy seems a perfectly conceivable number. If you want to be a national party, it's that you sort of accept the way the world is rather than want to endlessly hark back to how it was. Modi is promoting the digitization of the economy, which is accelerating growth in the country. I now request the Honorable Prime Minister to launch NDTV World and address the summit. It was the grand launch of NDTV World by Prime Minister Narendra Modi. NDTV World, as he laid out his vision for the India century at the NDTV World Summit. कैसी सदी जिसमें भारत के प्रयासों से दुनिया में स्थिरता आए. In the presence of those who are shaping our future. मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं. NDTV World, your new home for global news is here. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world. What a cracking year it has been in terms of launches. Kia is finishing the year with the launch of its MPV Kia Carnival. And we got to drive it in Bangalore. Here is the review. If you are looking for space and comfort in your car, there are a very few in the business who are as luxurious as the Kia Carnival. The 2024 model या फिर कह लीजिए चौथी जनरेशन किया कार्निवल भारतीय बाजार में आ चुकी है. कीमतों में हुआ है एक बहुत ही बड़ा उछाल. पहले लगभग 35 लाख रुपए एक शोरूम पे आती थी. Now it has been launched at around 64 lakh rupees एक शोरूम. So what has really changed? What is Kia's game plan? Let's find out in this video. Besides your house or the farm, this might be the biggest real estate that you own. Jokes apart, now the pricing has really gone up. Kia says they have completely missed the third generation. So it's a generation gap, second to the fourth that comes to the Indian market. और यहाँ पे तब्दीलियाँ जो की गई हैं वो है इसके फीचर्स में ढेर सारा रिविजन. डिज़ाइन बहुत ही नया, स्टाइलिंग बहुत ही फ्रेश और यहाँ पे ADAS फंक्शनैलिटी भी जुड़ चुका है. तो चलिए एक बार आपको डिज़ाइन दिखाने की कोशिश करते हैं. एक बार अगर आप फेस की ओर आएँ, दिस विल रिमाइंड यू ऑफ द अदर किया कार्स in the Indian market, especially the likes of Seltos and the little Sonnet. The face is more like an SUV now. It's started with chrome elements. एक काफी पैरामेट्रिक सा डिजाइन आपको फ्रंट फेस में दिख जाएगा. फेस को चौड़ा बनाने की कोशिश की गई है. It's more upright than the previous Carnival and the grille is also much larger. यहाँ पे जो लाइट का सेटअप है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है.
हमने ऐसा इंस्पिरेशन सेल्टॉस में भी देखा है. इट्स अ वर्टिकली स्टैक्ड LED लाइट क्लस्टर. द DRLs रन अराउंड इट एंड गिव्स इट अ क्वाइट हैंडसम लुक. 18 इंच के अलॉय पहले की तरह मिल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा गन मेटल फिनिश दिख जाएगा और ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं. ये जो साइड स्टेप है, दिस इज पार्ट ऑफ एक्सेसरी, स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं है. स्लाइडिंग डोर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हमने पहले भी कार्निवल में देखा है. तो स्लाइडिंग डोर्स आर स्टिल देयर. ओवरऑल जो गाड़ी की लंबाई है, दिस इज मैसिव, ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ. कनेक्टेड LED लाइट बार, ये एक नया एडिशन है. अगेन जो इसका एंड है, इसे काफी अपराइट बनाने की कोशिश की गई है. पीछे की ओर स्पॉइलर लिप भी काफी निकला हुआ है. दिस द वॉशर, और वॉशर अंदर की ओर ढका हुआ है. वेरी नीट इंटीग्रेशन, आपको एक प्रीमियम टच जरूर दिखेगा. इट्स ओनली द लिमोजिन प्लस वेरिएंट, single fully loaded variant that you get with Kia Carnival now in India. Onto the boot space, there is enough. I mean, even if you put all the 3 rows up, you have decent size space for keeping 3 full-size bags. And then, if you wish to, you can fold them down. काफ़ी easy tumble seats हैं, और इससे और ज़्यादा आप boot space, cargo volume बढ़ा सकते हैं. There are multiple configurations that you can play with. If you have to put the third row to use, I'm sure you will not be all that unhappy. For my size and stature, I am around 5'8". यहाँ पे मुझे space की कमी नहीं हो रही, especially for short rides. यहाँ पे आप देख सकते हैं, I am seated comfortably. However, जो मेरा leg position है, थोड़ा thigh is on the upward scale, मतलब यहाँ पे मुझे thigh support नहीं मिल रहा है, लेकिन the backrest angle is decent. 3 adjustable headrests, 2 लोग काफ़ी comfortably यहाँ पे बैठ जाएंगे. There is not lot of room to play around, मतलब मैं फीट मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आई हैव गुड अमाउंट ऑफ हेडरूम. इफ़ यू आर टिल 6 फीट हाई, दिक्कत नहीं होगी. जो अच्छी बात है वो है इसका क्वार्टर ग्लास, काफ़ी बड़ा क्वार्टर ग्लास है. मुझे व्यू विजिबिलिटी यहाँ से अच्छी मिल रही है, सो आई डोंट फाइंड माई सेल्फ क्लॉस्ट्रोफोबिक. और यहाँ पे प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए गए हैं. इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, थर्ड रो में आपको डेडिकेटेड AC वेंट्स मिल जाते हैं. यू ऑल्सो हैव काबी होल्स एंड यू हैव 2 चार्जिंग पॉइंट्स टू प्ले अराउंड. लेकिन जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है द एपर्चर ऑफ कमिंग इनटू द थर्ड रो. ये जो दूसरा सीट है, ये मैंने सबसे फॉरवर्ड सेटिंग पोजीशन पे रखा है, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस टू एक्सेस द थर्ड रो, विच आई फाइंड अ लिटिल डिफिकल्ट. स्पेशली अडल्ट्स को ये थोड़ी दिक्कतों में डाल सकता है. यहाँ पे टच ऑफ अ बटन, दीज ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स मेक वे फॉर देमसेल्व्स. प्राइवेसी की बात करें तो यहाँ पे यू हैव दी सनलाइट्स, हार्श सनलाइट या फिर पेपराजी से आप दूर रह सकते हैं. ऑल्सो यू हैव ड्यूल पेन सनरूफ. पैनोरामिक नहीं दिया गया है, बट आई रियली डोंट कंप्लेन ऑल दैट मच. अगर थर्ड रो में पैसेंजर्स है, दिस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस यू गेट. बट इफ यू आर अ शॉफर ड्रिवन ऑडियंस, थर्ड रो का उतना यूज नहीं है, देन यू वुड एक्चुअली अप्रिशिएट द फ्लेक्सिबिलिटी. दिस इज द अमाउंट that frees up if you push the seats all the way back. और यहाँ पे calf rest भी दिया गया है, so if you want to leisurely relax you can. और अगर आप अपने पार्टनर के पास आना चाहते हैं तो these seats also move sideways and reduce the distance between the passengers. यहाँ पे आपको heating and ventilation का फीचर मिल जाएगा for the second row. जो leathered fabric का इस्तेमाल हो रहा है, पहले के कार्निवल के मुकाबले थोड़ा चेंज हुआ है, be it in terms of texture or the color. I don't complain. You have good headrest. I mean, थोड़ा सा lateral support भी यहाँ पे दिया गया है. आपको adjustable armrest भी दिख जाएगा, और यहाँ पे electric feature भी मिलेगा to really recline. See, touch of a button, I can get into a really comfortable zone. You have dedicated AC vents. They are mounted on top, and you can control these features from here. So accessibility is not an issue. Space is good. Also, अगर आप co-passenger के पीछे बैठे हैं तो यहाँ पे एक boss mode वाला feature भी आता है. With the touch of a button, आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं seats को. First and foremost, the Carnival is premium inside out. On the interior, the big change has been on the screens. Let me turn this on. Right in front of me is a whole palette of screens. On the left is the main infotainment, which is 12.3 inches. The driver's display is fully digital. ये भी 12.3 इंच का दिया गया है. ऐसा connected
एक सिंगल पीस फ्लोटिंग यूनिट हमने दूसरी किया की गाड़ियों में भी देखा है, बट दिस वन फील्स रियली प्रीमियम अप मार्केट। और यहाँ पे जो डैशबोर्ड लेआउट है ये भी पहले के मुकाबले चेंज हो चुका है। दिस इज ऑल ब्लैक ऑन टॉप, सॉफ्ट लेदर मटेरियल, स्टिचिंग काफ़ी अच्छा यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन देता दिखाई पड़ रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ कट्स एंड क्रीजेस अराउंड द एसी वेंट्स एंड द मेन डैशबोर्ड। थोड़ा आपको इरेगुलर लग सकता है, टू मेनी लाइन्स हियर, लेकिन इट्स अगेन गेटिंग यूज्ड टू। काफ़ी फंकी सा यहाँ पे डैशबोर्ड पैनल दिया गया है। देयर इज सॉफ्ट टच मटेरियल ऑन डोर पैनल्स एज वेल, और यहाँ पे एक फ्लश मटेरियल दिया गया है जिसके पीछे आपको सर्टन अमाउंट ऑफ एम्बियंट लाइटिंग का इफेक्ट दिख जाएगा। रियली नाइस एंड हैंडसम रात के वक्त। जो डोर हैंडल्स दिए गए हैं ये भी ब्रश्ड एल्यूमिनियम के दिए गए हैं, गुड फिनिश। द सीट्स आर ह्यूज, दे हैव गुड सपोर्ट, और ये दोनों सीट्स फ्रंट के इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिए गए हैं। ऑल्सो द स्टीयरिंग व्हील इज न्यू, पहले के कार्निवल के मुकाबले दिस फील्स मच सॉलिड टू होल्ड ऑन टू। साइज भी थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है, बड़ा बन चुका है। जो एसी का पैनल है दिस वी हैव सीन बिफोर, एक हॉरिजॉन्टल सा एलिमेंट है विच एट द टच ऑफ अ बटन बिकम्स म्यूजिक कंट्रोल एज वेल। आप स्टीरियो सिस्टम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, which reminds me यहाँ पे आपको Bose के स्पीकर्स मिल जाते हैं। The sound quality is good and I really like it on the move। जो सेंट्रल टनल का एरिया है यहाँ पे जो कंसोल दिया गया है, this has also been redesigned completely। दो बड़े कप होल्डर्स दिए गए हैं, this come with retractable feature, मतलब अगर साइज छोटा है आपके कप का तो यहाँ पे आराम से ये फिट इन कर जाएगा। जो गियर लीवर है ये चेंज हो चुका है पहले के मुकाबले, ये ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है मुझे। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिल जाएगी, लॉट्स ऑफ चार्जिंग पोर्ट्स हियर। आपको 12 वोल्ट का यहाँ पे एक्सटर्नल सॉकेट भी मिल जाता है। देयर इज इनफ स्पेस आउट हियर। लेवल 2 ADAS इज नाउ देयर विद द किया कार्निवल। इवन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहले 6 एयरबैग्स मिलते थे, अब 8 एयरबैग्स कार्निवल में स्टैंडर्ड है। लेवल 2 ADAS भी यहाँ पे जुड़ चुका है, विच रियली विल हेल्प यू जब आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं। फीचर्स लाइक लेन से आप भटक ना जाएं, मिटिगेशन और वार्निंग, या फिर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, या फिर रिवर्स असिस्टेंट, जो फीचर्स हैं अच्छे फीचर्स हैं। रियल लाइफ में मुझे 360 डिग्री कैमरा काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिस्प। इसके साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑल 4 डिस्क ब्रेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। So it's time to hit the road and tell you how does the Kia Carnival feel on the move. Now if you occasionally choose to drive your Kia Carnival, you will not be disappointed all that much if you are hitting the highways. मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो 2.2 लीटर का डीजल इंजन है ये काफ़ी पावरफुल है, पोटेंट है। एक 8-स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ जोड़ा गया है। दिस इंजन मेक्स 193 हॉर्स पावर, 440 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। पहले के मुकाबले थोड़ा सा पावर हैज रिड्यूस, लेकिन डजंट रियली इम्पैक्ट ऑल दैट मच इन योर रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस। हाईवे पे ये बढ़िया लगेगी। एक स्पीड पे अगर आपको क्रूज करना है कंफर्टेबली फुल हाउस के साथ आप कर सकते हैं। देयर इज नो डर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। लगभग 1800 RPM से 3536 RPM, मतलब मिड रेंज आपको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। सो ओवरटेकिंग कम्स वेरी नेचुरल। हालांकि रेव बैंड अगर उपर की तरफ जाते हैं 3000 RPM के ऊपर, डीजल बिकम्स स्लाइटली नॉइजी, थोड़ा ग्रम्पी फील होता है, लेकिन रिफाइनमेंट ऑफ द इंजन इज डिसेंट। केबिन के अंदर आपको NVH लेवल्स उतने ज़्यादा फील नहीं होंगे। द इंसुलेशन इज गुड। ओवरऑल सस्पेंशन इज ऑन द सप्लर साइड, थोड़ा कंफर्टेबल रखने की ऑब्वियसली यहाँ पे कोशिश है, क्योंकि एक मोर ऑफ अ फैमिली कार, मोर ऑफ अ MPV। नीदर डू यू एक्सपेक्ट लॉट ऑफ हैंडलिंग भी काफ़ी स्ट्रेट एंड प्रिसाइज है, काफ़ी लंबी गाड़ी है, तो आपको थोड़ा सा डायमेंशन देख के सिटी ट्रैफिक में चलाना पड़ेगा। बट ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील जो है पहले से चेंज हो चुका है। दिस फील्स वे मोर बेटर टू ग्रिप than the previous Kia Carnival that I've driven. So overall, handling is not a huge change. It's more like a MPV feel. लेकिन suspension is on the suppler side. Brakes all 4 wheels में disc दिए गए हैं. Anchoring power is good. Level 2 ADAS जितना भी हमने try किया highways पे actually works fine for the course. मतलब Level 2 ADAS सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया रिवर्सिंग के वक्त, जब नोटिफिकेशन देती है ये गाड़ी इनकमिंग ट्रैफिक या फिर ब्लाइंड स्पॉट में, दोज आर रियली एक्यूरेट। ओवरऑल द परफॉर्मेंस इज मोर ट्यून्ड फॉर लेड बैक ड्राइविंग। बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट नहीं फील होगा, एंड दैट्स क्वाइट ट्रू टू द नेचर ऑफ द कार। लेकिन देयर इज नो
shortage of power on tap. अगर आप full house family के साथ trip पे जाना चाहते हैं, this is a place that you will find very comfortable. Thank you so much for joining us today. Now, I want a small Diwali gift from you. Subscribe to NDTV Auto and join us on your favorite social media platform. I will see you again and we wish you a very happy festive season. I'm here at the world's highest green hydrogen plant. I'm standing at 3,600 meters in Leh, Ladakh. This green hydrogen plant has been put up by NTPC as part of Mission Green Hydrogen. This is Prime Minister Narendra Modi's pet project. But what is green hydrogen and what makes it so special? One thing Ladakh is well endowed with is sunlight. This sunlight is harvested on solar panels. Electricity is generated through renewable energy. That electricity is then passed on to a special place where an electrolyzer breaks water into hydrogen and oxygen. It is a very tough bond to break, and you need very special chemicals to do that, and high energy. Since it's renewable energy, the hydrogen which comes out is called green hydrogen. The green hydrogen is then canistered, pumped, pressurized, and using a dispenser like this, put into green hydrogen buses like this. These buses use fuel cells. A fuel cell is where you pass hydrogen over it and it generates electricity at the other end. And then a battery is charged and then the bus runs like a normal electric bus. The effluent or the exhaust in a green hydrogen bus is water, because at the world's highest green hydrogen plant made by NTPC in Leh Ladakh, Pallav Bagla for NDTV. NDTV proudly upholds its legacy of trust and credibility. According to the prestigious Reuters Institute's Digital News Report 2024, NDTV is the top-most news platform in the country. Number 1 in both online and offline reach in India. Beating all its competition, NDTV stands for trust. New day, new show, a new experience. Start your day with the news, not views. We bring you stories that matter and impact your life. News that informs and keeps you ahead. From Maximum City, Mumbai, to the seat of power, Delhi, NDTV brings you the best breakfast show. Breakfast news on NDTV, 8 a.m. every day. We reached an agreement on patrolling. We have gone back to where the situation was in 2020, and we can say with that the disengagement. Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Osama Shah. The Aam Aadmi Party has claimed that the former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was attacked by the BJP. The BJP says that these are all false allegations. We'll get you the details of those stories. But first, let's get you the headlines. Aam Aadmi Party claims that former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was attacked by BJP goons. BJP refutes Aam Aadmi Party's charges. Ahead of polls in Maharashtra, Mahavikas Aghadi set to declare all seats by today and seal the seat-sharing formula. Meanwhile, Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray
releases its second list of 15 candidates. MS Dhoni appointed brand ambassador for Jharkhand elections. Dhoni has given the Election Commission consent to use his photo for the assembly elections. NDTV accesses first satellite images that show India and China disengagement in the Depsang and Demchok areas on the actual line of actual control in Ladakh after the agreement between both the sides. Images show Chinese structures removed from Indian areas. Army sources say that disengagement will be complete by month end. Report suggests hackers linked to the Chinese government targeted the phone communications of former US President Donald Trump and Vice Presidential nominee J.D. Vance as part of their cyber espionage activity aimed at high-level US targets. Trump's campaign says that Harris's campaign emboldened China. Iran's state-run Mehr news agency has dismissed media reports about explosions in Shiraz. Well, the big story that we're tracking at the top of this hour, the Delhi Chief Minister Atishi has accused the BJP of attacking Arvind Kejriwal, the former Chief Minister Arvind Kejriwal. She says that BJP goons, they attacked Kejriwal. And Aam Aadmi Party's India ally Samajwadi Party has in fact condemned the attack on Kejriwal. The BJP in the meanwhile has labelled the Kejriwal attack charges as baseless, is what the BJP has said. The BJP also added that Arvind Kejriwal is resorting to fake news now and that Aam Aadmi Party is desperate as they are losing the upcoming polls. पद यात्रा के दौरान जैसे लोग माला पहनाने आते हैं, माला पहनाने के नाम पर सामने आए और फिर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नारे लगाए और उन पर हमला किया। इस हमले में अगर बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के पास हथियार होते तो अरविंद केजरीवाल जी की जान भी जा सकती थी। ये बिल्कुल साफ है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी द्वारा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा केजरीवाल जी पर पहले भी हमले हुए हैं और एक बार भी दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का चुनाव हार रहे हैं। उनको जो ग्राउंड फीडबैक जमीन से आया है उसमें ये उन्हें पता चला है कि दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बन रही। उन्हें यह भी पता चला है कि कैसे बाकी के आम आदमी पार्टी के नेता उनकी कुर्सी छीनना चाहते हैं। अब जब कोई नेता डेस्परेट होता है तो वो फेक न्यूज का सहारा लेता है। वो खुद ही अपने लोगों को प्लांट कर रहे हैं, खुद ही अपने ऊपर हमला करवा रहे हैं और एक फेक सिंपैथी को जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में अगर आप बिना सिक्योरिटी के और बिना अपनी वीवीआईपी सिक्योरिटी के एक बार आप पैदल चल लीजिए आम आदमी पार्टी के जैसे आम आदमी के तहत, आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली की जनता में कितना गुस्सा है। वो गुस्सा अगर दिल्ली की जनता प्रकट कर रही है, इसमें ना भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल है ना कोई दूसरी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। Well, my colleague Shreya Ghosh joins us to get us more on this story. Shreya, these are very serious allegations that have been leveled by the Aam Aadmi Party because this concerns the security of a former Chief Minister of Delhi. That's right. Aam Aadmi Party has accused BJP goons of attacking National Convener Arvind Kejriwal. Of course, this happened yesterday during his Padyatra in Vikaspuri. The BJP chief, Virendra Sachdeva, he believes that people were merely asking him questions over the polluted water in Vikaspuri, and that is being exaggerated into a BJP-sponsored attack by the Aam Aadmi Party. But we can see visuals of a frenzied crowd during the
the Padyatra where a man is taking off his t-shirt and he is resorting to complete hooliganism. And senior Aam Aadmi functionaries have also alleged that there was a deliberate attempt in the BJP workers who were penetrating the security cover of Arvind Kejriwal, and they were constantly raising slogans against Kejriwal during his Padyatra, because remember that yesterday he was essentially warning the people of Vikaspuri that if BJP wins the assembly elections, then they will face more power cuts, and there will be inflated electricity bills, and therefore they should ensure that Aam Aadmi Party retain power in Vikaspuri, in the national capital. And of course we have seen responses being poured in from various parties that this is a serious security breach. Aam Aadmi Party current Chief Minister Atishi herself has said that over the last 2 years BJP has trapped him in false cases, got him arrested, refused to give him insulin, a person who has 30 years history of diabetes, and all these Aam Aadmi Party senior leaders are claiming that BJP is frustrated over the popularity and love and affection that Arvind Kejriwal still manages to garner among the masses, and that is why they are trying to damage his reputation. So this is what this kind of mudslinging has been going on, but this is definitely a serious security breach, because after all he's a former chief minister of Delhi, and seeing that kind of a frenzied crowd where a man literally tries to attack him, although we do not see that clearly in the visuals, but there could have been a possibility of attack. Right. But please note that there were no police FIRs have been filed. No police complaint has been filed so far in this case. Over to you. All right, Shreya Ghosh, thank you very much for getting us all the latest in that story. Meanwhile, the battle for Maharashtra, it is heating up. The Maha Vikas Aghadi is set to declare all seats today. In the meanwhile, Uddhav Balasaheb Thackeray Sena has released its second list of 15 names. The Congress Maha in charge, he has in fact said that there are no issues within the Maha Vikas Aghadi alliance, and the polls, remember, Maharashtra is set to go to polls on November 20th. Well, in Maharashtra, Maha Vikas Aghadi, we are going to fight the election together. There is no problem in Maha Vikas Aghadi. Problem is in Maha Yuti. See, in Maha Yuti, problem is much more. Maha Vikas Aghadi problem is very less. By tomorrow, we will. I asked Bharasab Torat to meet Uddhavji and Sharad Pawarji and thrash out all the issues. Well, our special report now from Juhu in Mumbai, where Juhu is a home to big industrialists and influential figures. The political battle is heating up in Juhu. We get you this ground report from there. Welcome to the vibrant heart of Mumbai suburbs, Juhu. Known for its iconic beach, Juhu Beach, where we are right now. Juhu is a perfect blend of cultural heritage, food hotspot and must-visit places. But remember, Juhu is just not a tourist spot. It plays a very important role during election because this constituency has some most famous celebrities from industrialists, Bollywood stars, very well-known people stay here. So it becomes a very important part during elections. Let's start with Juhu Beach, a go-to spot for Mumbaikars to relax and enjoy the sunset. Whether it's an early morning walk, an evening with family, or catching the sunset, it's all about those peaceful moments by the Arabian Sea. कुछ लगता है कि कोई बदलाव आना चाहिए इस जगह में, क्योंकि आप लोग हमेशा आते हो, आपको क्या बदलाव, बिकॉज अभी इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो आपकी बातें सुनेंगे लोग कि क्या आपको चाहिए कि यहाँ पे, बिकॉज आप एज टूरिस्ट आते हो.
हाँ, थोड़ा तो बदलाव आना चाहिए। जैसे जो पब्लिक आती है उनके लिए थोड़ा बैठने का जगह अच्छा होना चाहिए और थोड़ा साफ सफाई क्लियर ऐसा थोड़ा होना चाहिए। टूरिस्ट प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, अपना फर्ज है, अपने क्लीन करना चाहिए। पब्लिक को समझना, मतलब आ रहे हो घूमने हो, डस्टबिन रखा है यहाँ पे, डस्टबिन को कैसे डालो, हम ही अपना देश खराब कर रहे। और आपको कुछ लगता है कि सरकार को कुछ करना चाहिए आप लोगों के लिए, कि आप लोग फिशरमैन हो, यहाँ पे इतने सालों से आप लोग के पूर्वज भी यहीं पे रहते थे, हाँ। तो आप लोग के लाइफ के बेटरमेंट के लिए सबके लिए करना चाहिए। मतलब जो है ना, जो गरीब लोग हैं, जो देखो छोटे बच्चे तो घूमते रोड पे देते, एक ही बात बोल दो सरकार को, उन लोग कुछ करो, एजुकेशन फ्री करो, अच्छा हॉस्पिटल करो, उसको देखो प्रॉब्लम है उसको हेल्प करो। Besides street food, Juhu is home to some of Mumbai's best restaurants and cafes. From breakfast spots to fine dining, there's something here for every foodie. Oof, the October heat in Mumbai. I'm exhausted, which means it's time for a chai break. And what better place than this iconic Prithvi Theatre? And while you're at the cafe, make sure to step into Prithvi Theatre, a cultural hub where you can catch live performances. Established by the legendary Kapoor family, this theatre has been a breeding ground for talent and artistic expression in Mumbai for decades. Is there anything that you are unhappy about or want to change in your area as the elections are coming? No, nothing about. We are very happy over here. All we are East Indian, we are living over here in Gautam. We are very happy what we are living from so many ancestors' time we are living over here. So we are very happy, thankful for everything what is as it is. There have been so many development around this area, you know, big buildings, constructions, everything, traffic, clubs, so many things. They should not do all these things. They should not go, because when they are digging, they are going 40 feet, 60 feet, and that all stone is break, and we are not getting this all environment is very bad. Sake of that, they should not go underground. Juhu is also a hotspot for Bollywood's biggest stars. Many of the industry's most famous celebrities call Juhu home, including Amitabh Bachchan, Akshay Kumar and Hrithik Roshan. It's common to see fans gathered outside their bungalows, hoping to catch a glimpse of their favorite actor. Whether you're strolling by the famous Jalsa or just walking around the neighborhood, you never know, you might just bump into someone. Between all the chaos, Juhu is also the place where you will find a moment of serenity. Visit the ISKCON temple, where you can experience spiritual calm amid the busy city. It's a peaceful retreat for devotees and tourists alike. ये जो रास्ता है बहुत पैक्ड हो जाता है, एक ट्रैफिक है, आपको लगता है कि ये वाला कोई सुधार हो सकता है? मैम अब तो क्या कर सकते हो, इतनी सारी बिल्डिंग्स बन चुकी है, यहाँ पर ऐसा कोई जगह है नहीं और पॉपुलेशन दिन को दिन बढ़ता जा रहा है और यहाँ डेवलप मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ हो सकता है, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि कोई ज़्यादा स्पेस है नहीं यहाँ पर कुछ करने जैसा और क्राउड बढ़ता जा रहा है। ऑन एन एवरेज घर में जितने मेंबर्स उतनी गाड़ियाँ हैं, तो ये है कि प्रशासन चाहे तो थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, कुछ गलियाँ कंजेस्टेड है और कुछ गलियों की सड़कें बहुत ख़राब है, इधर बारिश में बहुत दिक्कत होता है, तो उस पर काम करना चाहिए। इतने सालों में आपने कोई इम्प्रूवमेंट देखा है? इम्प्रूवमेंट ये देखा कि सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, महिला इधर काफ़ी सुरक्षित है, किसी भी टाइम वो आ जा सकती हैं, उस मामले में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। पुलिस अपने आप में बहुत अलर्ट रहती है इधर, तो उस मामले में बहुत अच्छा काम हुआ है। Juhu, with its diverse mix of influential residents, celebrities, business leaders, and a vibrant middle-class community, reflects a range of voter concerns. As election season approaches, this constituency is sure to be closely watched. Reporting from Mumbai, this is Abira for NDTV. And as far as the disengagement between China and Indian forces in Ladakh is concerned, NDTV has accessed first images of the actual disengagement. Here's a special report.
Well, this is very, very significant, and it does, in fact, prove fairly conclusively that the process of disengagement, which was announced by India's Foreign Secretary first in Kazan, then by the Foreign Minister at the NDTV World Summit, and then, frankly, agreed upon and reiterated by both the leaders, Xi Jinping and Prime Minister Narendra Modi in Kazan, that is actually taking place. So let me describe what you're seeing on your screen. These are the Depsang Plains. The Depsang Plains lie along the line of actual control right to the north of Ladakh. The image on the left-hand side of your screen shows approximately 4 vehicles and a couple of tents, tarpaulins, if you like. This, I believe, is in a place called the Y Junction, or close to a place called the Y Junction, where Indian soldiers were prevented from actually traveling east in the direction of their patrol routes. The patrol routes, or what are called the patrolling points, or PPs, are in fact the extent of the line of actual control which India claims in these areas. If you look at the picture on the right-hand side of your screen, you can see those tarpaulins having been removed completely. The vehicles which were stacked are moving away. There are other vehicles also visible. And the landform itself where the tarpaulin was placed has been righted, has been fixed. That's part of the agreement. Let's go to the next set of images. And this shows the Demchok area. The Demchok area is in the very south of Ladakh. It's not too far from Himachal Pradesh. This is another area where there have been consistent differences between India and China. But if you look at the image on the left-hand side, this is on the 9th of October, 2024. You can see a couple of structures. These are Chinese buildings, semi-permanent structures, which marked an area where the Chinese had built these structures. It's disputed because India also claims this area. But if you look at the right side of the image, you can see that, this is from today. So these images are just a couple of hours old. These have been removed. And therefore, this is quite clear. These images coming to us from Maxer at a request that we put in for these images based on what we learned was an ongoing process. And this actually tends to suggest that the process of disengagement, at least in these 2 areas, is well and truly underway. This does mark the beginning of a huge set of confidence-building measures, which would now be put into place between India and China. What we saw in 2024 was terrible, absolutely. We saw the loss of so many Indian lives in Galwan, Chinese lives lost as well. Huge differences on the line of control, Indian soldiers being prevented from getting to their patrolling posts. And then fairly out of the blue, we've seen this agreement after dozens of rounds of military talks, which were unsuccessful. Finally, diplomatic talks, I would suggest, along with some military talks, which were taking place in the background, enabled an agreement to be reached at between India and China. Now, while we don't know all of the aspects of the agreement between India and China, the fact is that this disengagement is taking place. India believes it's a complete disengagement, which has been called for. This will enable India to actually patrol in these areas. This isn't to suggest the Chinese soldiers won't patrol in these areas. Again, the exact nature of the agreement, which has been arrived at, has not been disclosed thus far. But a very, very welcome signs indeed that what we are now seeing is a return to the pre-2020 situation. And it's a festive Diwali for actor Kartik Aaryan, who is gearing up for the release of his film Bhool Bhulaiya 3 on November 1st. He spoke to NDTV's Abhi Radha. Diwali just round the corner. What is your memories with Diwali? Tell us something if you can share with us, childhood memories of Diwali and one ritual that you'll always make sure it's a Diwali ritual at home. All of us wear new clothes. That's one thing which we follow at home. So वो चीज़ तो बचपन से वो हो रही है, and we have always been excited कि we get some new clothes for everyone and in our family and we do that, and वो of course मुहूर्त होता है, पूजा होती है, तो वो एक set time पे हम लोग पूजा करते हैं घर पे, and visiting friends and families and of course they are also visiting us, and so that's been the case always. And I remember that बचपन में भी यही करते थे हम लोग, और पटाखे बहुत पहले करता था, अब नहीं करता, अब तो बंद ही हो गया, बट बचपन में होता था, बट बहुत अब and also but I was excited about the fact that sweets या ये सब जो खाना बनता था उसके लिए मैं बहुत excited होता था.
अभी भी खाना बनता है अच्छा, अभी भी वो यू नो ऑल दोज लाइक स्वीट्स एंड मिठाइयाँ एंड मठरी और गजक और ये यू नो सो देयर आर स्टफ विच स्पेसिफिकली जो दिवाली में बनती है एंड सो आई एंजॉय दैट. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू Diwali days. Because last time when I met you, मुझे पता है आप डाइट पे थे, चंदन चैंपियन हुआ था, and you told me about all that crazy diet you were doing, remember? Yeah. So now 2 साल तो दिवाली नहीं बनाई मैंने. So there you go, 2 साल नहीं बनाई दिवाली. इस दिवाली तो इस दिवाली भूल भुलैया वाली अगर होती है तो बहुत खाना खाऊंगा. Okay, I have a Diwali rapid fire for you. Okay, quickly. When we say Diwali, what comes to your mind? Like holidays, छुट्टी, मजे. Yeah. One Diwali tradition you follow at home. The same thing I said. Wearing new clothes. Yeah. Sweet or savory? What's your favorite Diwali snack? Sweet. Do you prefer lighting diyas or bursting crackers? Lighting diyas. One Diwali gift you will never forget. It's weird. My sister gifted me a PlayStation, so I remember. Ladki और PlayStation. Yeah. Oh my God. Okay, a Bollywood movie you love watching maybe every Diwali. Every Diwali. दिवाली में मैं थिंकिंग मतलब थिएटर्स जाके तो जो रिलीज होती है वही देखूंगा, लेकिन एवरी दिवाली अगर मुझे फिल्म देखनी है, अगर दिवाली सोचो तो क्या मूवी दिमाग में आती है? जैसे मैं बोलूंगी हम साथ साथ हैं. हाँ, मैं बोलूंगा भूल भुलैया. 1 देख लो, 2 देख लो, अभी 3 देख लो. कैसे कोई अपना प्रमोशन कैसे इतना कर रहा है भाई, देख लो. Okay, fine, I'll take it. Lakshmi Puja or Diwali parties, which one are you more excited about? ये दिवाली पार्टीज का कॉन्सेप्ट ना मेरे लाइफ में बहुत लेट आया, वो यहाँ पर आकर आया और वो भी ऑफ लेटली. तो मैं लक्ष्मी पूजा ज़्यादा एक्साइटेड रहता था क्योंकि वो विथ फैमिली रहता है पूरे टाइम एंड या तो. Okay, gold, silver or something else? What's your Diwali shopping guilty pleasure like? I'm thinking. कभी गोल्ड खरीदा है मम्मा के लिए दिवाली के टाइम पे? नहीं, उन्होंने खरीदा. मैंने नहीं खरीदा गोल्ड, नहीं खरीदा सिल्वर. I don't know. I'm clothes, more and more clothes. Like I don't stop. Oh really? Yeah. You are shopaholic when it comes to this. Yeah. कारहॉलिक भी सब कुछ. मैं ये नहीं बोला कि गाड़ियाँ खरीद लेता हूँ. नहीं, ये नहीं बोला. ये मैंने अभी तक इस दिवाली मैंने गाड़ी नहीं खरीदी. ये सोच के बताना, a Diwali tradition you will want to pass on to the next generation. I think spending time with your family. वो बहुत होता है दिवाली में कि you get time to spend with your family and otherwise we are usually you know in our own world and I think दिवाली में ये बहुत बचपन से ये रहा है मेरे कि घर पे हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उस दिन. दिवाली में हम कोई बाहर नहीं जाते. हाँ, it's more like that. That's the ritual because लक्ष्मी आती है. Exactly. Right? Exactly. दरवाजा खुला रखते हो? दरवाजा खुला नहीं रखते, अभी रखूँगा. अभी रखूँगा. Hello, Moto. Motorola Edge 50 Pro, world's first AI-powered pro-grade camera. I've been reporting on all issues, big and small, from Andhra Pradesh, Telangana, rest of South India, bringing you all the action, all that you need to know, all that you want to know. The energy of Maximum City is infectious. I bring in that energy in our news coverage from financial capital Mumbai. India's IT capital is always buzz. It's literally a city that never sleeps. And I keep you ahead on all the Bengaluru buzz. Covering from the southernmost part of India over the last 23 years, I bring
in-depth and 360-degree coverage from the Dravidian heartland. The land of Mishti is also known for its bitter politics. I have seen much water flow under the Howrah Bridge, covering Bengal in all its vivid colors. तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे आदरणीय मोदी जी का। छत्रपति शिवाजी महाराज की। घोषणा आणि जनतेचे पैसे लुटणं. कट कमिशन आणि करप्शनला आमच्याकडे थारा नाही. त्यांचा परिवारवाद आमचा महाराष्ट्रवाद. महाराष्ट्रामध्ये 1,75,000 जागा रिक्त आहेत. मग का मिळत नाही? राज्याची जनतेच्या घमाच्या पैशाची तिजोरी लुटण्यासाठी हे सरकार आहे. पूर्वीच्या सरकारच्या काळामध्ये निधी देताना त्यांना असं वाटायचं की त्यांच्याच खिशातले पैसे चालले. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचं काम आपल्या सरकारने सुरू केलं. Hello and welcome to India Sense, where I speak with global opinion makers. The United States has made a strategic decision over the last 20 years to move closer to India. So a $7 trillion economy seems a perfectly conceivable number. If you want to be a national party, it's that you sort of accept the way the world is rather than want to endlessly hark back to how it was. Modi is promoting the digitization of the economy, which is accelerating growth in the country. I now request the Honorable Prime Minister to launch NDTV World and address the summit. It was the grand launch of NDTV World by Prime Minister Narendra Modi. NDTV World, as he laid out his vision for the India century at the NDTV World Summit. ऐसी सदी जिसमें भारत के प्रयासों से दुनिया में स्थिरता आए. In the presence of those who are shaping our future. मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं. NDTV World, your new home for global news is here. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world and more. Download the NDTV app today and get access to the best journalism and storytelling on your smartphone or tablet. The NDTV app. News that matters to you. We reached an agreement on patrolling. You know, we have gone back to where the situation was in 2020, and we can say with that the disengagement process with China, you can say, has been completed. The understanding, to my knowledge, is that we will be able to do the patrolling which we were doing in 2020. NDTV proudly upholds its legacy of trust and credibility. According to the prestigious Reuters Institute's Digital News Report 2024, NDTV is the top-most news platform in the country. Number 1 in both online and offline reach in India. Beating all its competition, NDTV stands for trust. New day, new show, a new experience. Start your day with the news, not views. We bring you stories that matter and impact your life. News that informs and keeps you ahead. From Maximum City, Mumbai, to the seat of power, Delhi, NDTV brings you the best breakfast show. breakfast news on NDTV, 8 a.m. every day. I've been reporting on all issues big and small from Andhra Pradesh, Telangana, rest of South India, bringing you all the action, all that you need to know, all that you want to know. The energy of Maximum City is infectious. I bring in that energy in our news coverage from
Hello friends and welcome to the fresh episode of Gadget 360 with Technical Guruji. मेरा नाम है गौरव aka TG and basically मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि I compile everything around gadgets in each episode just for you. मतलब हर रोज कितने नए नए gadgets launch होते हैं, आपकी curiosity जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है. Sometimes you have many questions, मैं उनके जवाब आपको देता हूँ, आपके लिए interesting tips भी share करता हूँ और कुछ interesting facts भी बताता हूँ. Because this gadget space is really fun. I love gadgets, you love gadgets, so why not we proceed और आगे बढ़ते हुए पता लगाएं कि आखिर हुआ क्या है in the field of gadgets in this episode of your favorite show Gadget 360 with Technical Guruji. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, ये जो गैजेट्स की दुनिया है ना, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अब एक नया कुछ प्रोडक्ट जब आता है उसके पीछे जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ R&D दैट गोज ऑन. कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स, कुछ फेल हुए, कुछ पास हुए और कितनी सारी चीजें मिलती हैं तब जाके हमें एक नया गैजेट मिलता है. एंड ये दुनिया हर रोज बदल रही है, हर सेकंड कुछ ना कुछ नया हमको मिल जाता है. तो लेट्स फर्स्ट टेक अ क्लोजर लुक टू अंडरस्टैंड कि आखिर क्या हलचल है इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स इन दिस सेगमेंट न्यूज ऑफ द वीक. Apple has refreshed their iPad mini for 2024 with the A17 Pro SoC, जो हम iPhone 15 Pro models में already देख चुके हैं. It now supports Apple Intelligence and the Apple Pencil Pro as well. iPad mini 7th gen 4 colors में available है: blue, purple, starlight और space gray. It can be bought for a starting price of rupees 49,990 in India. Samsung has announced the upcoming expansion of 4 new languages for Galaxy AI: Turkish, Dutch, Swedish and Romanian. Galaxy AI अभी 16 languages support करता है and after this update it will have support for 20 languages. ये updates October end से roll out होंगे and the users will be able to download these updates as language packs from the settings app of compatible Galaxy devices. Infinix Zero Flip is the new vertically folding phone from Infinix. इस स्मार्टफोन में आपको 3.64 इंच का AMOLED 120Hz कवर डिस्प्ले मिलता है जो 1100 निट्स तक की ब्राइटनेस ऑफर करता है. Infinix Zero Flip 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है: रॉक ब्लैक और ब्लॉसम ग्लो, and the brand is selling it for an introductory price of rupees 44,999 after combining all the offers. Garmin launched its new Phoenix 8 series of premium multisport GPS smartwatches in India. इन smartwatches की USP इनकी durability और reliability है. There are 2 models for this smartwatch, one with an AMOLED display and another with a solar charging display. The brand claims that the AMOLED model will offer up to 29 days of battery backup and the solar model will offer up to 48 days of battery backup. इन स्मार्ट वॉचेस का स्टार्टिंग प्राइस रुपीज 86,990 रखा गया है. Now friends, the first gadget that I have for this week's episode is this. एक smartphone है of course, and this is the latest coming from Samsung. It is the Samsung Galaxy S24 FE. Now FE अगर आपको नहीं पता है stands for the fan edition. मतलब this is the smartphone which Samsung thinks is suitable for all the Galaxy fans. मतलब यहाँ पे the kind of features it packs काफी आपको एक complete package मिल जाता है because the experience is quite polished. Just like a flagship S24 phone, but थोड़ा उससे नीचे बैठता है the S24 FE. Big screen, dynamic AMOLED 2x screen है in fact, a big battery, Exynos 2400E processor, a properly functional triple cam setup, a metal frame, IP rating. इस फोन में आपको वो सब कुछ मिलता है जो शायद आपको चाहिए होगा. Basically on top Galaxy AI भी है. Let's have a closer look at this Samsung Galaxy S24 FE.
Samsung's fan edition smartphone is back for 2024 with the Samsung Galaxy S24 FE. When compared to its predecessor, the S23 FE, जो last year launch हुआ था, the S24 FE comes equipped with a slightly larger, brighter display, a bigger battery, new SoC, and the addition of Galaxy AI features जो usually Samsung के flagship smartphones में होते हैं. The S24 FE sports a 6.7-inch FHD Plus AMOLED 2x display with a peak brightness of 1900 nits. ये आता है equipped with a triple rear camera setup जिसमें एक 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है और ये स्मार्टफोन 8K 30 FPS के रेजोल्यूशन पर भी वीडियो शूट कर सकता है अपने रियर कैमरा से. S24 FE में 4700 mAh की बैटरी आती है, but the smartphone still supports 25 watts of wired charging and 15 watts of wireless charging. It comes equipped with Samsung's Exynos 2400E processor. Now this is a 4nm SoC and it comes in two variants, 128GB of storage and 256GB of storage, and दोनों ही variants में 8GB RAM standard है. The smartphone retails starting at 59,999 in India with 3 color options to choose from: blue, graphite and mint. So friends, ये है वो फोन जो कि Samsung Galaxy fans के लिए है, the Samsung Galaxy S24 FE, basically packing all the essential in this nice package. और अब आपको सब कुछ पता है कि इस फोन में क्या है. वैसे फोन में या टेक्नोलॉजी में चाहे जो भी हो, समटाइम्स वी से दैट इट लैक्स द इमोशन. अब देखो यार, इमोशन डेफिनेटली लैक करता है कहीं ना कहीं, बट देन अगेन AI इज पिकिंग अप, काफी चीजें डेवलप हो रही हैं. एंड गाइस, डिड यू नो, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं, आपके स्मार्टफोन से ही जुड़ा है. बिकॉज सी, स्मार्टफोन स्मार्ट इसलिए बना बिकॉज वी यूज टन्स ऑफ एप्लीकेशंस इन आवर फोन्स, तभी तो ये स्मार्ट बन पाया. अब दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे करोड़ों करोड़ों लोग अपने स्मार्टफोन्स को यूज करते हैं. उनमें अलग अलग एप्स को दे यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. टिंडर एक ऐसी एप्लीकेशन है विच पीपल यूज फॉर डेटिंग. एंड डिड यू नो इट बिकेम द फर्स्ट ऐप जिसने 2 लोगों को कनेक्ट कराया इन अंटार्कटिका. यस, तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर 2 लोगों को कनेक्ट कराने वाली पहली अपनी कैटेगरी की एक ऐसी ऐप बनी टिंडर. जस्ट लाइक मेटालिका वाज द फर्स्ट बैंड जो सभी कॉन्टिनेंट्स पे प्ले हुआ. मतलब अगर हम ग्लोबली देखें तो इट्स डेफिनेटली अ बिग मूव. वैसे मुझे लगता है कि अंटार्कटिका में जितने लोग होंगे वो शायद एक दूसरे को पहले से ही जानते होंगे, बट देन अगेन टिंडर केम फॉर द रेस्क्यू और वहां पे 2 लोग कनेक्ट हो पाए यूजिंग एन एप्लीकेशन ऑन देयर स्मार्टफोन्स. डू यू नो दिस? यस, देन वेरी गुड. अगर आपको नहीं पता था तो यू नो क्या आपको करना है. प्रीटी सिंपल, आपको ईमेल लिखना है tg@ndtv.com पे. Now friends, the next gadget I have, it's pretty interesting because it looks like this. Now take a guess कि ये क्या हो सकता है. हो सकता है आप शायद ठीक से guess ना कर पाए, but guess करना becomes pretty easy अगर मैं इसको ऐसे पहन लूँ तो. Because ये जो है guys, these are the latest earphones from Nothing. They're called the Nothing Ear Open. They are open ear style earphones with this quite unique design. मतलब कान में पहनना is like कि जैसे कुछ पहना ही ना हो, because feels like nothing, sounds like everything, और आपको आपके आसपास की आवाजें भी ये सुनाते हैं for better reasons. काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स लेके आते हैं. इनफैक्ट एक अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं if in case you want to enjoy your music on the go while running, जहां पे आपको आपके आसपास की आवाज भी सुननी है और म्यूजिक का मजा भी उठाना है. Quite uniquely designed. Let's have a closer look at these latest Nothing Ear Open. Nothing has launched a couple of earbuds in the past, but their latest premium offering, the Nothing Ear Open, stands out from the lot. These earbuds are priced at 17,999 in India और ये आते हैं iconic Nothing see-through charging case के साथ. The earbuds themselves, they don't look like anything from Nothing, quite frankly. They have these long ear hooks that are made up of soft silicone so that users को ear discomfort ना हो और वो इनको longer durations के लिए use कर सके, पहन सकें. The earbuds, they weigh just 8.1 grams each. According to Nothing, the Ear Open has a talk time of up to 24 hours और टोटल बैटरी लाइफ इनकी up to 30 hours है चार्जिंग केस के साथ. सिर्फ 5 मिनट का चार्ज आपको 2 घंटे की बैटरी लाइफ दे देता है. They use AI to enhance call quality and offer a noise-free calling experience to the listeners. ये earbuds IP54 rated हैं water and dust resistance के लिए, so you don't have to worry about them getting wet and dusty. The Nothing Ear Open is available to buy only in the white color.
नो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आप इन ईयरफोन्स को या अपने ईयरफोन्स को यूज करेंगे और एंजॉय करेंगे अपने फेवरेट म्यूजिक को, बट अभी के लिए जो आप करेंगे वो करना है थोड़ा सा इंतजार, बिकॉज मैं आने वाला हूं ब्रेक के ठीक बाद, जहां पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप देने वाला हूं. इट इज रिलेटेड टू साउंड, तो बहुत ज्यादा काम आएगी आप सबके, और इनफैक्ट आपके सवालों के जवाब भी देने वाला हूं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. घोषणा आणि जनतेचे पैसे लुटणं. कट कमिशन आणि करप्शनला आमच्याकडे थारा नाही. त्यांचा परिवारवाद आमचा महाराष्ट्रामध्ये 1,75,000 जागा रिक्त आहेत. मग का मिळत नाही? राज्याची जनतेच्या घमाच्या पैशाची तिजोरी लुटण्यासाठी हे सरकार आहे. पूर्वीच्या सरकारच्या काळामध्ये निधी देताना त्यांना असं वाटायचं की त्यांच्याच खिशातले पैसे चालले. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचं काम आपल्या सरकारने सुरू केलं. Hello and welcome to India Sense, where I speak with global opinion makers. The United States has made a strategic decision over the last 20 years to move closer to India. So a $7 trillion economy seems a perfectly conceivable number. If you want to be a national party, is that you sort of accept the way the world is rather than want to endlessly hark back to how it was. Modi is promoting the digitization of the economy, which is accelerating growth in the country. I now request the Honorable Prime Minister to launch NDTV World and address the summit. It was the grand launch of NDTV World by Prime Minister Narendra Modi. NDTV World, as he laid out his vision for the India century at the NDTV World Summit. कैसी सदी जिसमें भारत के प्रयासों से दुनिया में स्थिरता आए. In the presence of those who are shaping our future. मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं. NDTV World, your new home for global news is here. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world and more. Download the NDTV app today and get access to the best journalism and storytelling on your smartphone or tablet. The NDTV app. News that matters to you. We reached an agreement on patrolling. We have gone back to where the situation was in 2020, and we can say with that the disengagement process with China, you can say, has been completed. The understanding, to my knowledge, is that we will be able to do the patrolling which we were doing in 2020. NDTV proudly upholds its legacy of trust and credibility. According to the prestigious Reuters Institute's Digital News Report 2024, NDTV is the top-most news platform in the country. Number 1 in both online and offline reach in India. Beating all its competition, NDTV stands for trust. New day, new show, a new experience. Start your day with the news, not views. We bring you stories that matter and impact your life. News that informs and keeps you ahead. from Maximum City, Mumbai, to the seat of power, Delhi. NDTV brings you the best breakfast show. Breakfast news on NDTV, 8 a.m. every day.
NDTV proudly presents NDTV World Summit 2024, the India Century. I now request the Honorable Prime Minister to launch NDTV World and address the summit. Prime Minister Narendra Modi's inaugural session at the NDTV Summit outlined his vision for the India Century, driven by aspirational India. हमारा प्रयास होगा भारत की सेंचुरी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की जीत की सेंचुरी बने. The summit brought together prominent global leaders, highlighting India's pivotal role on the world stage. Not just Indians trusting India's leadership, but the global South especially trusting India's leadership. Permanent seat on the UN Security Council is something. So hello guys, welcome back once again after the break to your favorite show Gadget 360 with Technical Guruji. मेरा नाम है गौरव aka TG and basically break से पहले मैंने आपको बताया था कुछ नए गैजेट्स के बारे में और अभी टाइम है टू गिव यू सम टिप्स अराउंड दीज गैजेट्स. तो आज की जो टिप है वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है. सी द फैक्ट इज कि हमारे स्मार्टफोन्स में ना बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, एक्सेलरोमीटर, जायरोस्कोप, माइक्रोफोन, दिस दैट, मतलब देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ सेंसर्स पैक्ड इनसाइड एवरी स्मार्टफोन. नाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दीज सेंसर्स फॉर योर बेनिफिट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी लेवल चेक करना है किसी सरफेस का कि सरफेस एकदम बिल्कुल एक फ्लैट लेवल पे है या नहीं, तो यू कैन जस्ट यूज द बबल लेवल काइंड ऑफ सिमुलेशन इन योर स्मार्टफोन. आपको बहुत सारी एप्स मिल जाएंगी प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, और काफी फोन्स पे तो ये इनबिल्ट फीचर की तरह भी आता है जहां पे इट यूजेस द जायरोस्कोप टू फिगर आउट कि एनी सरफेस दैट यू वांट टू ट्रैक इफ इट्स कंप्लीटली फ्लैट और नॉट. इनफैक्ट आपके फोन में जो माइक्रोफोन्स हैं वो भी बड़े काम के हैं बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव, और आपको ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी विच कैन टेल यू इनफैक्ट कि जो नॉइस लेवल्स हैं आपके आसपास वो क्या हैं, व्हाट इज द डेसिबल रेटिंग ऑफ द साउंड दैट यू आर एक्सपोज्ड टू. आपको सीधा आपके फोन के स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है. प्रीटी यूजफुल अगर आपको चेक करना है कि इफ द एनवायरनमेंट अराउंड यू इज टू लाउड, या हो सकता है यू हैव चेंज द एग्जॉस्ट ऑफ योर व्हीकल और आपको चेक करना है कि इज इट अंडर द नॉर्म्स या आपकी साउंड ज्यादा तेज जा रही है. ऑल यू नीड इज जस्ट वन एप्लीकेशन, योर स्मार्टफोन, और आप ये काम घर बैठे कर सकते हैं. क्वाइट इंटरेस्टिंग टिप, टेक अ लुक. और ऐसी एप्लीकेशंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगी जहां पे योर फोन एसेंशियली बिकम्स योर टूल किट. यस, जस्ट अ फोन फॉर एवरीथिंग दैट यू माइट नीड. पता है तो शेयर करो, और नहीं पता है तो एपिसोड्स देखो ताकि आपको ऐसी और टिप्स मालूम चल सके. So friends, now it's time for me to answer आपके दिमाग की सारी क्यूरियोसिटी से भरे हुए सारे सवाल जो भी आपने पूछे हैं in regards to your gadgets. Let's see the kind of questions we have for this week's episode. मैंने सुना है ऐसा एक अभी मॉडर्न डे ट्रेंड चलता है दैट यू शुडंट गिव एन आईफोन टू योर पेरेंट्स. बेसिकली आईफोन इज नॉट द कीवर्ड हियर, द कीवर्ड हैज टू बी अ स्मार्टफोन. और सबके अपने अपने लॉजिक हैं दैट एट दिस एज, जिस एज पे आपके पेरेंट्स हैं, यू शुडंट एक्सपोज देम टू दीज न्यू टेक्नोलॉजीज बिकॉज कई बार ये इतना हेल्दी नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ कि अगर ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करते हैं तो उनकी आंखों के लिए ठीक नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल, या इफ़ दे आर कम्प्लीटली एक सिंपल लाइफ जीने के बाद में तुरंत अभी टेक स्पेस में आ जाते हैं, तो दैट हैपन्स टू बी द रीज़न. बट इसके फिर ऑन द अदर साइड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं इफ़ दे आर एक्सपोज्ड टू स्मार्टफोन. तो इट डिपेंड्स. दोनों तरफ एडवोकेट्स हैं जो कुछ बोलते हैं कि स्मार्टफोन्स नहीं देने चाहिए, कुछ बोलते हैं कि नहीं, स्मार्टफोन्स आर क्वाइट एसेंशियल फॉर इवन आवर पेरेंट्स. तो जस्ट दैट्स द रीजन. इसके अलावा ऐसा कुछ एज सच रीजन नहीं है कि यू शुडंट बी गिफ्टिंग और गिविंग आईफोन्स टू योर पेरेंट्स. I wouldn't say they're exactly the same, but yes, they share quite a lot of features and काफी बड़ा overlap है if you take earphones from Oppo and OnePlus. Sometimes they are very very similar, sometimes they don't look the same, but the features are kind of same. तो yes, because it's the same parent company, तो आपको काफी products के अंदर काफी overlap देखने को मिलता है, especially in case of earphones.
Yes, I definitely use AI, and I use AI for many things. I use AI to kind of make my life easy. काफ़ी सारे ऐसे repetitive tasks जो होते हैं उनको solve करने के लिए AI जो है वो काफ़ी अच्छे से help कर देता है. If I'm trying to edit a photo or a video जहाँ पे normally Photoshop would take maybe a day, AI would do in just 2 minutes. So AI के अलग-अलग use के scenarios हैं. Maybe if I am stuck somewhere, I want some new ideas, तो AI could be a nice starting point. तो AI मतलब मुझे मतलब you know this is the way that I should propagate this as well, that consider AI as a tool, not a replacement for anyone, but just a tool for you to do things in a better way. तो I incorporate AI in all my tasks जहाँ मुझे लगता है कि yes, AI could be of some use. स्मार्ट पॉट्स आप बाय कर सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज इंडोर गार्डनिंग की अगर हम बात करते हैं तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो कि यू वांट जस्ट टू हैव अ स्मार्ट पॉट जहाँ पे वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है. AI डेफिनेटली हेल्प कर सकता है, तो इट डिपेंड्स द वे यू वांट टू प्रोसीड विद इट. बट येस, स्मार्ट पॉट्स आर डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन फॉर यू टू हैव सम नाइस इंडोर प्लांट्स जहाँ पे द वे द केयर इज टेकन वो सारा काम बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी की मदद से हो जाता है. Diwali tech shopping list. Oh ho. Basically, it's for friends. It's for people around me. Now, I don't shop as such. मतलब I shop all around the year. तो ऐसा कुछ दिवाली को लेके specific नहीं है. But maybe if you want to gift and if you want to have some gifting ideas, तो छोटे smart home appliances जो हैं वो काफी trend में हो सकते हैं. Maybe a small speaker is a good gifting idea. A pair of headphones, maybe a new phone or a power bank, these kind of things, a new camera for example, a new smartphone. तो बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, बट पर्सनली मैंने दिवाली को लेके अपने लिए एज सच कुछ शॉपिंग नहीं करी है. Okay, so friends, that's all from my side. This week's episode of Gadget 360 with technology. I think हर बार की तरह बहुत फन होगा आप सभी के लिए, because हमको नए नए गैजेट्स के बारे में जानने को मिलता है, उनके बारे में काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाता है और इनफैक्ट फिर सवालों के जवाब भी मिलते हैं. आपको ये सभी चीज़ें एक बार वापस से मिलने वाली हैं, बट नेक्स्ट वीक, बिकॉज अगले वाले एपिसोड में और ज़्यादा फन होगा विद इवन मोर एक्साइटिंग ग्लोइंग गैजेट्स. काफ़ी मज़ा आने वाला है. सो अभी के लिए इतना रखते हैं. स्टे tuned for next week. Have a good day and take care. Vibrant heart of Mumbai suburbs, Juhu, known for its iconic beach, Juhu Beach, where we are right now. Juhu is a perfect blend of cultural heritage, food hotspot and must-visit places. But remember, Juhu is just not a tourist spot. It plays a very important role during election because this constituency has some most famous celebrities from industrialists, Bollywood stars, very well-known people stay here. So it becomes a very important part during elections. Let's start with Juhu Beach, a go-to spot for Mumbaikars to relax and enjoy the sunset. Whether it's an early morning walk, an evening with family, or catching the sunset, it's all about those peaceful moments by the Arabian Sea. लगता है कि कोई बदलाव आना चाहिए इस जगह में, क्योंकि आप लोग हमेशा आते हो. आपको क्या बदलाव, बिकॉज अभी इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो आपकी बातें सुनेंगे लोग कि क्या आपको चाहिए कि यहाँ पे, बिकॉज आप एज टूरिस्ट आते हो. हाँ, थोड़ा तो बदलाव आना चाहिए. जैसे जो पब्लिक आती है उनके लिए थोड़ा बैठने उठने का जगह अच्छा होना चाहिए और थोड़ा साफ़ सफाई क्लियर
ऐसा थोड़ा होना चाहिए। टूरिस्ट प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, अपना फर्ज है, अपने क्लीन करना चाहिए। पब्लिक को समझना मतलब आ रहे हो घूमने हो, डस्टबिन रखा है यहाँ पे, डस्टबिन को कचरा डालो। हम ही अपना देश खराब कर रहे हैं। और आपको कुछ लगता है कि सरकार को कुछ करना चाहिए आप लोगों के लिए, कि आप लोग फिशरमैन हो, यहाँ पे इतने सालों से आप लोग के पूर्वज भी यहीं पे रहते थे, हाँ। तो आप लोग के लाइफ के बेटरमेंट के लिए सबके लिए करना चाहिए। मतलब जो है ना, जो गरीब लोग हैं, जो देखो छोटे बच्चे तो घूमते रोड पे देते, एक ही बात बोलते हो सरकार को, उन लोग को यूज करो, एजुकेशन फ्री करो, अच्छा हॉस्पिटल करो, उसको रहेगा कुछ प्रॉब्लम है उसको हेल्प करो। Besides street food, Juhu is home to some of Mumbai's best restaurants and cafes. From breakfast spots to fine dining, there's something here for every foodie. Oof, the October heat in Mumbai. I'm exhausted, which means it's time for a chai break. And what better place than this iconic Prithvi Theatre? And while you're at the cafe, make sure to step into Prithvi Theatre, a cultural hub where you can catch live performances. Established by the legendary Kapoor family, this theatre has been a breeding ground for talent and artistic expression in Mumbai for decades. Is there anything that you are unhappy about or want to change in your area as the elections are coming? No, nothing about. We are very happy over here. All we are East Indian, we are living over here in Gautam. We are very happy what we are living from so many ancestors' time we are living over here. So we are very happy, thankful for everything what is as it is. There have been so many development around this area, you know, big buildings, constructions, everything, traffic, clubs, so many things. They should not do all these things. They should not go, because when they are digging, they are going 40 feet, 60 feet, and that all stone is break, and we are not getting this all environment is very bad. Sake of that, they should not go underground. Juhu is also a hotspot for Bollywood's biggest stars. Many of the industry's most famous celebrities call Juhu home, including Amitabh Bachchan, Akshay Kumar and Hrithik Roshan. It's common to see fans gathered outside their bungalows, hoping to catch a glimpse of their favorite actor. Whether you're strolling by the famous Jalsa or just walking around the neighborhood, you never know, you might just bump into someone. Between all the chaos, Juhu is also the place